I think we're live. I think we're live. Yep, ये बंद कर देते हैं. Hi guys, welcome to the first stream on my channel of this year. काफी लंबे टाइम बाद, of course, अभिनव has to be the first person. ये लड़के ने आज मेरे को मोटिवेट किया है. क्योंकि सीन ये हो गया था कि there are multiple streams happening today and I was like skeptical, but अभिनव was like, sir, आपने Discord पर कहा है कि Wednesday को आप करोगे, तो करना ही पड़ेगा. So here we are. Hi guys, आ जाओ जो सब भी है पहले आ जाओ. Hi यार, this is Sakshi. तुझे सुन के I have started writing poems. Thank you so much, Sakshi. Thank you so much. Hi, hello. Sarcastic शुभ shout out दे दो. लो भाई, early आया. ठीक है, कुछ शायरी हो जाए सर. ठीक है, जैसे वक्त आगे आगे बीतता है हम जरूर करेंगे. या बुटवाला बिग फैन, थैंक यू सो मच. 112 को यश पाटिल, वाह क्या नाम है भैया. अपनी राइटिंग पोएम कैसे इम्प्रूव करूं? अच्छा, सीधा यही से शुरू हो गए हम. ठीक है, इसके ऊपर भी धीरे धीरे वील डिस्कस. सबसे पहले देखिए यार, लेट्स बी जेनरस, क्योंकि नया साल है, पहला स्ट्रीम है, बहुत लंबे टाइम बात कर रहा हो, तो प्लीज लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो. हेलो अंकल. रोनित निकलो प्लीज. रोनित नहीं, प्लीज. अंकल अंकल नहीं लूंगा मैं, ये गलत बात है. हेलो सर, आई एम न्यू ईयर एंड इन लव विथ योर पोएम्स. थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू सो मच. सर गर्लफ्रेंड की याद आ रही है तो मैसेज करना. ये क्या बात हो गई? गर्लफ्रेंड की याद आ रही है तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैसेज कर दो गर्लफ्रेंड को. एकदम सही टाइमिंग है आज. थैंक यू सो मच सिमरन. इज द मोस्ट कंसिस्टेंट स्ट्रीमर इन द वर्ल्ड. ऑलराइट देन. भाई 40 रुपए दे दिए तुमने, एक छोटी सी शायरी हो जाए सर प्लीज. स्टेटस कट्टा ने एकदम ही मतलब. ठीक है भाई, मूड सीधा ओपनिंग ही ये कर दी आज कि शायरी सुनानी पड़ेगी. ठीक है, लेट मी गो थ्रू हिंदी पोएम दैट आई कैन. भाई ये एक पुराना पीस है. मतलब तुमने एकदम ही ऐसे बोनी कर दी तो मैं शुरू कर रहा हूँ पीस के साथ, वरना दिस इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड या बीच में. नाइस सेट ऑफ फोटोज इन द बैक. थैंक यू सो मच. दिस इज यंग मी, क्यूट मी. I mean cuter than this. Your poem gave me relief when I was heartbroken. I am glad it could. I'm glad. Why are you so cute? Genetics, Anil. It's just genetics. Mummy daddy. Beautiful. ठीक है, मुझे 2 मिनट दे दो. किसने दिया था मुझे वो स्टेटस कट्टा? जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी थरली बी प्रिपेयर्ड विद दिस पीस. ऐसा नहीं, मतलब बीच में अटकना नहीं चाहिए ना आदमी. भाई साहब, ये एक अलग पीस है, मैंने इसको ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, विच इज वाई मुझे एक बार बस देखना पड़ेगा. तक कोई पानी से कभी मैं रेत हूँ जिस पे कागज. ठीक है भाई, वाह. अंकल पोएम्स. मैं अंकल कोई नहीं बोलेगा यार, ये क्या बकवास है यार. अंकल मत बोलो यार, क्या ही मतलब. ठीक है, दिस वंस कॉल्ड मैं बदलता रहता हूँ. कभी मैं एक नई नई सी किताब हूँ जिसके पन्नों में खुशबू है और उन्हें अब तक मोड़ा नहीं गया, जिसके अंत तक कोई पहुंचा नहीं है, जिसे पढ़ने के लिए सब उत्साहित रहते हैं. कभी मैं कभी मैं रेत हूँ जिसपे छाप रह जाती है उन कदमों की जो पक्का रास्ता देखकर निकल चुके हैं फिर अपने सफर पर, और छोड़ गए हैं अपने निशान मेरे वजूद पर जिसको मैं मिटा नहीं सकता. मैं कागज से परेशान भी रहता हूँ, कभी ख्वाबों का हवाई जहाज हूं तो कभी नामुमकिन के दरिया में एक नाव हूं. पर ज्यादातर मैं एक छोटी सी गलती से बर्बाद हुआ खाली कागज ही हूं. मैं आग भी बन जाता हूं कभी कभार. वैसे आप आग को कैसे देखते हो निर्भर करता है कि आप आग से कब मिले हो. जो मशाल में दिखे तो उम्मीद, जो जंगल में दिखे तो तबाही. पर मुझ में जो नहीं बदलता
वो कुछ शाम सा है। शाम। शाम फरियादी भी है और सुकून भरी भी, उसमें चुप्पी भी है और शोर भी। शाम एक ही वक्त में दोहरी जिंदगी जीती है। मुझे लगता है हम सब हर पल दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। बस ये अच्छी बात है कि बुरी, ये नहीं से समझ पाए हम। तो हाय रब्बा, आई होप आपको पसंद आया। ओहो, एक और सुपर चैट आया है। स्टेटस कट्टा, आई होप यू एंजॉयड। वाओ, आई मे हैव लॉस्ट ट्रैक योर सर स्टेलर के लिए एक्साइटेड। हाँ जी, टिपटेल कर रहे हैं। यार वेयर आर दोस म्यूजिकल कर्टन्स। हाँ वो थोड़े मैंने हटा दिए, मतलब माफ कीजिएगा। ग्लासेस कितने के हैं, महंगे नहीं है मतलब। इतने लाइक कर दो चैट बस। हाँ भाई, योर पोएम्स, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट योर अल्फाज का सफर का टूर, इज इट स्टिल ऑन? नो दीपा, सो वीव मैं फेब में करने वाला था पहले, बट वीव टेकन अ ब्रेक राइट नाउ, लाइक वी आर स्टिल सीइंग हाउ द कंडीशन इज। उस हिसाब से वील टेक अ कॉल, तो फेब मार्च में इंशाल्लाह हो जाए। प्लीज बोल दो सलीना लव देव, मतलब आई होप सलीना लव्स देव, वरना क्या ही। Till death we do art, of course. We've been missing your writings, want you to be more and more active. जी, the good part is that Feb में I'm putting out like a few videos. तो 2 videos आएंगी I guess Feb में. I hope you guys like that. जनता, let's go to 200 likes. Yes, 200 पहुंचा दो भाई। उसके बाद डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गौरव ही, थैंक यू सो मच। दैट वाज अ वेरी स्वीट वन। अरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो अभी, मतलब और कितना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। जिनकी खुद कुछ नहीं उखाड़ पाते, कुछ कर नहीं पाते, दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए उन्हें कुछ कुछ पंच करते रहते हैं। सर आपको कहाँ से अंकल लगते हैं? जो अंकल बोल रहे हैं वो खुद ग्रैंड। अरे प्रियासी टेंशन नहीं है, वो मस्ती कर रहे हैं। बुरा नहीं मानेंगे, हम मस्ती कर रहे हैं वो लोग। एवर बीन टू नेपाल? नहीं यार। यू एंड योर पोएम्स आर जस्ट ओपी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह, वडोदरा जरूर आना। डन। डज हैबिटेट पे यू? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। बट यू नेवर नो। I mean, Habitat is a great place because it's a platform for artists. It doesn't make sense for them paying us right now, right? Because they give us the stage. That is the biggest payment that they are doing to us. भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरे दिल को सुकून देने के लिए कुछ सुना दो। अभी जस्ट सुनाया दोस्त। Will be waiting for your upcoming videos, buddy. Karampreet, I'm glad. I am hoping that you will enjoy that. खैर, गाइस, तो जैसे आप जानते हैं अनफिल्टर्ड का एक रूल है। यू गिव मी टॉपिक्स, यू टेल मी अबाउट व्हाट थिंग्स दैट यू वांट मी टू डिस्कस एंड वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोस। तो यू कैन स्टार्ट हिटिंग विद टॉपिक्स इन द चैट, और मैं उस हिसाब से जो टॉपिक पे मुझे थोड़ा बहुत समझ है या जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, वील डेफिनेटली गो ऑन दैट। You're starting on love and once क्या love and shit one once again. नितिन, start writing on love and shit once again. shit क्या बोल रहे हो भाई? हैंडसम बोलो या क्यूट बोलो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो मेरे पापा के अकाउंट से? 23 साल की लड़की इतने हैंडसम बंदे से फ्लर्ट की ट्राई कर रही है, साक्षी। भाई ये हिम्मत वाली बात हो गई भाई कि तुम पापा के अकाउंट से यूट्यूब पर पापा के अकाउंट से आ रहे हो फ्लर्ट करने के लिए। सी एंड सनसेट, I think it's a beautiful combo, dude. Come to Punjab, inshallah zarur. You're good. Keep going. Thank you. स्लो मोड भाई, इतना वेट आज तक नहीं करा मैं 5 हाथ डालने। Samira, slow mode is on 60 seconds. I like someone more than love. Okay, good for you. I mean, have you ever been inconsistent? Yeah. How did you track yourself back into being consistent? That's a good question. So, कृषि शर्मा ने ये पूछा है। ये मैं डिस्कॉर्ड पर भी हाल ही में डिस्कस हुआ था कि what do you define as consistent and how important is to stay consistent. तो
I feel like सबसे पहले how do you define consistence? Is consistence for you putting out work to the world? जैसे मतलब हम कहते हैं ना कि हर एक हफ्ते में मतलब हर महीने में एक वीडियो डालना है. Do you call that consistency? Or because I think that is not the consistent part. That is like you trying to churn out work, है ना? मतलब वो regulate करते कि हर एक मतलब वो महीने की पहली तारीख को एक वीडियो डालना है. I feel like that is you trying to force creativity to put it in a schedule. For me, what consistency is that whatever be your field, suppose जैसे अभी मेरा field writing है, right? So films, reading books, all of these come in my field. So for me to be consistent is to watch a film every day, to read at least 20, 25 pages, 30 pages in a day of a book, right? That is for me being consistent as a writer. तो कंसिस्टेंसी फॉर मी इज रिसर्च, कि आपका जो फील्ड है आप उसके अंदर कितना रिसर्च कर रहे हो, आप उसके अंदर कितना ध्यान रख रहे हो, वो कंसिस्टेंसी. एंड आई फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. देयर आर डेज व्हेन यू लूज होप, क्योंकि क्या होता है ना, हम सबके साथ ऐसे दिन आते हैं दैट वी सॉर्ट ऑफ लूज ट्रैक ऑफ व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ failure and things don't go our way. So in on those days I remind myself that it is okay to take that break and it is okay to feel however I am feeling, but I must remember that I have to come back on track, because I can't get lost. If I get lost, everything that we've reached till now, that goes away, right? And another important thing about consistency, like जैसे मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा है ये करने के लिए, करेक्ट? At every point I have to justify that to myself. I have to remind myself that I am here because like I was doing a job, right? I have left that to be here, so I have to justify this correctly so that I don't end up being there, because I love doing this. So yeah. Opening question, motivational सुना दो सर कुछ. शायरी मस्त थी सर एंड वेटिंग फॉर योर न्यू वीडियो. थैंक यू स्टेटस कट्टा, मतलब भाई क्या स्वीट बंदा है. I am angry on my girlfriend because I'm jealous of a boy she talks to. What should I do? Um, Dude, I think discuss, communicate. मतलब तुम jealous हो, you are being honest about it that you're jealous about that fact. Don't be angry with your girlfriend. Discuss this with your girlfriend. Communicate with your girlfriend. Ask, like, tell her why you feel jealous about it. ऐसा हो सकता है कि द गाय मे हैव मोर फीलिंग्स जो कभी कभार एज अ फ्रेंड लड़की को नहीं दिखती, पर आपको एज अ गाय दिखता है, क्योंकि लड़कों को पता चल जाता है, ठीक है, हमें पता है कौन किस तरीके से क्या अप्रोच कर रहा है या क्या तरीके से आगे बढ़ रहा है. सो वी गेट अ फेयर आइडिया, बट we can't blame our partner for maintaining that friendship, right? Because for them it's an honest friendship. So explain to them what your issue is, how it is, and just have honest communication, because that's the goal. When are your new poems coming? In Feb. Let's do something on career and life. Actually, Karanpreet, actually we can make the whole session today about career and life. कुछ सुना दो, आई ही हो तो. मैत्रेया, आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा. मैं जस्ट अभी एक पीस सुनाया था. वी कैन डू समथिंग अबाउट मोटिवेशन. नहीं, क्या था, करियर के बारे में. Guys, we are just 104 members away from 5,000 members on Discord. Wow! ये तो मुझे भी अभी पता चला. Guys, 104 मेंबर दूर है. आज हम 5,000 भी कंप्लीट करेंगे डिस्कॉर्ड पर, ठीक है? How lockdown has affected the studies? भाई सुहासिनी मिश्रा ने ये पूछा है. आई थिंक व्हाट इट हैज डन इज it has shown us this fault of our education system also and fault of us as people also, कि हमारे education system में सबसे important है पास होना. There is nothing more important than just getting grades and passing out. Our education system and us as people also in the system do not focus on wanting to learn something, to find something that is new for us. हमें इतना पोर्शन है, इतना पढ़ना है, इतनी एग्जाम देकर निकल जानी है.
ऑनलाइन एग्जाम के अंदर तो लोगों ने और फंडे निकाल के रखे कि एंड दिस अ फैक्ट डूड, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर इतनी कॉपी हो रही है, इतनी कॉपिंग होती है. आई फील लाइक अंत में व्हाट इज द रिजल्ट? यू कॉपीड, यू गॉट योर ग्रेड्स, यू आर आउट. इमेजिन नेक्स्ट ईयर सबको 85% अबाव ही मिलने वाला है. हाउ हैज दैट हेल्प्ड एनीवन? So that's just sad, dude. And I feel really bad that, college life has been compromised or school life has been compromised, because that is the years, that is the days when your personality is being developed. आज रात नहीं ढूंढेंगे, आसमान को लूटेंगे, धुआं उड़ा के झूम 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 झूम. इंग्लिश पोइट्री की बुक्स भी रेकमेंड करना, मैं पूरी वीडियो देखूंगा बाद में. वाह नितिन, मतलब छोड़ के जा रहे हो आप? आराम से खाने के बाद देखेंगे, ठीक है. इंग्लिश पोएम्स आप कौन सी पढ़ सकते हैं? लॉर्ड ऑफ द बटरफ्लाइज बाय एंड्रिया गिब्सन. रूडी फ्रांसिस्को की दो किताबें हैं, एक हीलियम है और एक और आई थिंक इट केम बैक 6 months बैक. सो दीज आर गुड books for English poems. Can you talk about dreams when they are crushed and I missed. Huh. So can you talk about dreams when they are crushed and you can't do anything about it? पता है, लाइफ में सबसे ज्यादा टफ पार्ट मुझे यही लगता है. दिस इज द मोस्ट स्कैरियस्ट थिंग फॉर मी इन माई लाइफ. योर ड्रीम्स गेटिंग क्रश्ड एंड you being helpless and not being able to do anything about it. I have always tried to be on the side के आपका गोल है, आप उसके अंदर पूरे खुद को झोंक देते हो. But what if you aren't able to do it? How do you cope with that? And I seriously don't have an perfect answer to it, because I'm freaking scared of it. Today, what I'm doing is also a fact because of my super big fear of failure. I fear of failure. I fear that if I fail, I'll end up where I was. And not that it's like a very bad space, it's just not the best space for me. And मैं चाहता हूँ यार कि आई अचीव थिंग्स, एंड दैट्स द मेन गोल, राइट? कि व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू पुट योरसेल्फ completely in it. What if it just fails? I don't know what another alternative is. अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस है तो ट्रस्ट के ऊपर कुछ बनता है सर. प्लीज पिक दिस टॉपिक, ट्रस्ट. यार, the thing, this is a very great topic, I'll tell you why. Our generation has grown up on a way where we stopped trusting. Like we all of us have trust issues because अब क्या होता है ना, सबके पास एक एक्सपीरियंस होता है. जैसे रिलेशनशिप्स में जब हम हमेशा कहते हैं ना कि women can't trust guys because they've had a bad relationship, or we have trust issues because we've had friends who've stabbed us in the back, or मतलब धोखा दिया है. ये सब हुआ है, और बड़े धोखे नहीं है, छोटे छोटे धोखे होते हैं, ठीक है. और सबको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए. हाउ डू यू फाइट दैट आउट? और मैं सबको हमेशा ये कहता हूँ कि मैथ्स में सिखाते हैं दैट लाइक देयर इज अ सैम्पल साइज, राइट? सो वेन एवर यू आर मेकिंग अ डिसीजन, यू डू इट विद अ सैम्पल साइज. कि अगर 50 लोगों को आप लेते हो एंड यू लाइक आस्क देम अ क्वेश्चन एंड 40 पीपल रिस्पॉन्ड विद अ यस, 10 पीपल रिस्पॉन्ड विद अ नो, तो हम अज्यूम करते हैं कि because 40 people responded with a yes, the majority of the world will also respond with a yes, because that's how a sample size works, right? We take samples to understand the larger audience. But in real life, you can't take sample sizes. You can't take the fact that you've been betrayed in life by like 10 people. So everyone will betray you in life. You can't work with sample sizes. That's the weird part, because 10 people can mess you up, but one person will help you stand up. And it's so weird, it's so weird. I know सब ऐसे सोच रहे होंगे कि तो क्या मतलब उसे एक इंसान के लिए हम इंतजार करते रहे.
इतने धोखे का है, इतनी मार खाते रहे अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक इंसान के इंतजार में. बट द पॉइंट इज यू डोंट नो हाउ दैट वन पर्सन विल हेल्प यू आउट. सो इवन दो इट्स वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू से, बट डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपका डर आपकी जिंदगी में आपको इतना ब्लाइंड कर देता है दैट यू सॉर्ट ऑफ मिस आउट ऑन द पीपल हु कुड हैव हेल्प्ड यू एंड कुड हैव मेड योर लाइफ बेटर. सर मेरी एक फ्रेंड है जो आपकी बहुत बड़ी फैन है. सर 1 साल से एक लेटर डेडिकेट करना चाहती है आपको, प्लीज देख लो. बिजॉय जरूर यार. नाम क्या है, लाइक जस्ट नाम बता दो तो मैं चेक कर लूंगा इंस्टाग्राम पे अगर कुछ हुआ तो. वाह, ग्लासेस मस्त लग रहे यार, जच रहे तुम पे. थैंक यू सो मच. नहीं गया, थैंक यू. अच्छा नितिन यही पे. श्योर आकांक्षा, टेक केयर यार. मेरी क्लासेस अभी, आई हैव टू गो. प्लीज एक बार नाम ले लो. आकांक्षा मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है, बट आई एम गेसिंग दैट यू आर नॉट योर टू योर दिस, सो सैड. Can you talk about anger? I can definitely talk about anger, Ram. राम प्रवेश चौहान कह रहे हैं कि गुस्से पे बात करो. आई थिंक एंगर हैज ऑलवेज इन द मोस्ट केसेस गॉट द वर्स्ट ऑफ अस. बिकॉज क्या होता है ना, एक पुरानी कहावत है कि एक समझदार आदमी से हमेशा तब बात करो जब उसका पेट भरा हो. क्योंकि खाली पेट सिर्फ गुस्से वाली बातें होती है. खाली पेट आदमी सही फैसले नहीं कर पाता. गुस्से में क्या होता है ना, द आइडिया ऑफ एंगर एज एन इमोशन इज डिस्ट्रक्शन, राइट? Anger blinds you with the fact that you've been hurt, so it is fine to you for you to cause hurt. कि अगर आपको चोट लगी है तो आप भी चोट पहुंचाओ. और ये गुस्सा आपको उस तरीके से ब्लाइंड कर देता है. द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट आई गिव यू इज वर्ल्ड वॉर 2 में आफ्टर the whole war was sort of over, right? There is this series Band of Brothers, आप देख सकते हो उसमें. So after the whole war was over, there is this one battalion of American soldiers that reach a village, German village, or on the outskirts is a concentration camp. ठीक है. And the Germans in that village are very angry that they lost the war, Hitler is dead, because they've always hated Jews. Now these guys, the battalion on the outskirts finds a concentration camp where they see the conditions of the Jews people, like who are in there, right? A lot of them survivors, a lot of them dead. And it's a heartbreaking visual. ये सीरीज में दिखाया गया है, ठीक है. सो व्हाट दे डू इज कि जो सब वहां पर मर गए, गुजर गए, तो वो जो गांव के लोग थे, जो सारे जर्मन लोग थे, उन्हीं को लाया जाता है और उन्हीं को बोलते हैं कि अब तुम ही जमीन खोदोगे इनके लिए और तुम ही दफन करोगे, राइट? एंड दीज पीपल हैव ऑलवेज बीन एंग्री अबाउट that it has been our land, why are they living here and stuff. So when they are digging the graves and they are putting the bodies, they realize what their anger has done, right? They start seeing as humans what they've done to another human, and they start feeling bad. They start feeling destroyed internally about the things that have happened. And it teaches them this one fact that the anger, the hate got the worst out of them because they regret it. They regret seeing a fellow human in that condition. And it's a very intense scene. But yeah, you can see that मतलब वो सीरीज आप देख सकते हो. साथ ही साथ एक किताब है द बुक थीफ करके, आप वो पढ़ सकते हो, बहुत ही शानदार. बट या वाह, सब इंटेंस बातें करवा रहे हो तुम मुझसे. How to filter friends, because most are fake, or at some point we stop talking to them by choice or by condition. Anurag, I mean, I wouldn't say most of them are like, if you feel most of your friends are fake, it's also with the fact कि तुम भी मतलब तुम्हारा contribution to the friendship has not been 100%, right? Because if you are 100% invested in a friendship, तो सामने वाला
कितना फेक बन सकता है, राइट? एट सम पॉइंट दे विल आल्सो फील लाइक द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी करेक्ट. बट जो आपका ये बात है कि एट सम पॉइंट वी स्टॉप टॉकिंग टू देम बाय चॉइस और बाय कंडीशन, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक. क्योंकि क्या होता है, यू मे हैव बीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बट यू आउटग्रो एक्सपीरियंसेस इन अ वे कि जब आप दोस्त बने थे ना, तो आपकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैच करती थी कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज या आप जिस तरीके से दुनिया को देखते थे या इवन योर डिफरेंसेस वर एक्सेप्टेबल. बट धीरे धीरे आप जैसे जैसे ग्रो होते हो और दूसरा दोस्त नहीं ग्रो हो पाता उतना उस स्पेस में, राइट? सो द थिंग्स दैट यू शेयर, योर सर्कल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सपीरियंसेस बिकम बिगर कंपेयर्ड टू देयर्स, which sort of makes the bond weak for you. करेक्ट, बिकॉज अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने जितना हासिल कर लिया है ये दोस्त उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है. लाइक everything that this person had to offer is already with you. So now it doesn't feel like a friendship where you're gaining something. And friendship subconscious, every relation works subconsciously that way, that you grow with a person. Correct. When you don't see growth, you start feeling detached with the person. I have realized that we tire out too soon. हमें जैसे मिल जाते हैं ना चीजें कि अब इसमें से क्या अभी मुझे लाइक दिस पर्सन इज नॉट हेल्पिंग इन माय ग्रोथ, we are too soon to stop communication and back out quickly. But I've realized that every person has something to offer. Like my school group constantly offers me an idea of innocence. um, Even with the wavelength of things that I've experienced, I realized that the level of innocence that comes from them is something I will never get in the world now. So hence I am so attached to my school group. My poetry group is always constantly challenging me in terms of intellect and in terms of things and art. तो हर ग्रुप में ना कुछ है रस. बट या अभी मैं थोड़ा एक बार आई थिंक आई जस्ट रीड कमेंट्स before I start on a topic. Thank you, Yaji, for making us know that what we are through your writings, because after seeing your writings now I put on so well. Thank you so much for this from the bottom of my heart. I am glad Aduluri, man, that name. Vanilla. I'll just call you Vanilla. Bro, my stand on that is I focus on goal rather than result and put what hard I can put in. And at the time of getting results, I'm mentally prepared that maybe a success or a failure, I don't care. I mean, that's a great way to do it. But एक चीज होती है ना कि how much love can you put in a project with the idea of no result at all? Think of it again. मैं वापस बोल देता हूँ. How much love can you put in a project with the idea of no result at all? क्योंकि at some point you feel deviated. At some point you start feeling like, why am I doing this? Correct. So I feel like वो बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमें पता है constantly that where is this going? Like I'm putting effort in this project, but where is the project heading? So it's very important to have purpose for everything that you start. Started feeling for my best friend. Finally gathered up courage to tell her and got rejected all times. I have always been rejected, but still I believe in universe ki koi to hoga hi. Karthik, definitely. I mean, I don't say that believe in the concept of soulmates, क्योंकि भाई बहुत stressful चीज है. आप अगर सोचने जाओ कि इतने लाखों करोड़ों की दुनिया में अगर हम कहें कि हमारा एक सोलमेट है जिसके साथ हमारी जोड़ी बनी हुई है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ऐसे मेरे को फेरी टेल लगता है. बट आई बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट of there being a person for you who will understand you, not completely, with whom you will always still have fights, but at the end of the day, who will stand by you, who will be there to resolve them with you. And that's a very important thing. Soham, I will come to you on this one. How do you consistently maintain a clear headspace as an artist on a regular basis? On your bad days, how do you keep yourself motivated? I'll come on this one. I just want to see क्या बातें चल रही है. Can you differentiate friendship with love with a girl? Sir, can you differentiate friendship and love with a girl? I mean, of course, इन्फैक्चुएशन और प्यार में तकलीफ हो सकती है, पर दोस्ती और प्यार में नहीं होती है.
I think it also comes from the fact that अब बहुत वक्त से जब when you don't have someone and your friend is a constant जिसके साथ you started sharing, you constantly share and everything, तो धीरे धीरे आपको लगता है कि अरे यही है, यही तो इंसान मुझे हमेशा समझता है, ये इंसान मेरी हर चीज को समझ जाती है, और आप अपने आप उसे एक लव का इमोशन दे देते हो. आई थिंक इट कम्स ऑल्सो फ्रॉम द फैक्ट दैट you are not getting someone outside this space, which is why you put your focus there. It comes from the space of am I alone and why am I not getting someone a lot of times. मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, जेनिल झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. I am 16 plus but still have crush on you. I mean, how do I react to this? Please, okay. मतलब this is weird. How do I react on that? Okay. What about Indian media? Let's not go there right now. Very crazy. एक तो हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में. हिंदी का अपमान मत करो, अंग्रेजी. क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, हिंदी और अंग्रेजी अगर मैं साथ में कह रहा हूँ तो उसमें तकलीफ क्या है? इट्स भाषा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बात सही करना. अगर तुम सही भाषा पकड़ो और बात गलत करो तो ज्यादा बेवकूफ कहलाओगे. उससे अच्छा जो भाषा में आप बोल पा रहे हो, जो भाषा जनता भी समझ पा रही है, अगर आप उसी भाषा में अपनी सारी बातें उनकी तरफ पहुंचा सकते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है. और मी इनटू सा, एक तो नाम भी थोड़ा थोड़ा कहाँ से रखते हो ये नाम, बट एक चीज याद रखना. It is so much easier to point out flaws while you're sitting in your room on a bed or in your chair looking at a phone. Um, but it's much more tougher to be in that space. And what is the tougher part is to understand what the other person is doing. So, yeah. Just want to tell you that seeing new content, the reels on your Instagram on Dash after a while and not seeing any in a while makes me really not okay. तुम खुश हो कि मैंने Instagram पे इतना रील कंटेंट डाला है. आई एम ग्लैड. ओके, यस. अबे यार भाई, ये प्रॉब्लम पता है क्या है कि इफ समवन पुट से समथिंग, जैसे अभी वो जो मिंटू सा जो भी था उसने इंग्लिश हिंदी की बोली, अब मैंने उसके बारे में बता दिया, अब तुम उसको उसकी लेने बैठे हो. क्यों कर रहे हो भाई? छोड़ दो ना, मैंने बात कर ली ना, हो गया, खत्म करो. डोंट गो बिहाइंड समवन एंड जस्ट स्टार्ट टेकिंग देयर केस. यू इट मेक्स इट वर्स. It's almost like a way of bullying. That's exactly how it works. It's the point is not that are you right or are you wrong. The point is that in either cases you don't have to go behind someone to prove your point or you know gang up on them, because that is bullying. अब सही वजह से करो, गलत रीजन के लिए करो, bullying गलत ही है in general. Once have a glance at American literature. To Kill a Mockingbird. I've read these. These are proper classics, dude. कैसे हो यार भैया? और यहाँ भी फॉर्मल मीट मोड में आ गए. हाँ हाँ, इस मोड में रहना बनता है, लेकिन फिर भी चिल भाई. मैं चिल. अच्छा, ऋषभ, ऋषभ मेरे डिस्कॉर्ड पर. भाई मतलब मैं, आदमी बकैती कैसे करेगा जब सामने कोई हो, दो तीन लोग बात कर रहे हो, जैसे अभी सुहानी ये लोग सब साथ में होते तो बात बात में बकैती हो जाती है. मैं इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बकैती करूं मतलब? और क्वेश्चन भी ऐसे है कि क्या ही बताऊं. हाउ डू यू मैनेज टू यू आर सो क्यूट, हेलो आई एम फैन. अभी भाई चैट पर कितना टाइम लगाया था, इतना टाइम लग रहा है. टा, 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 टा. Want to go very confused. What do you do when you are confused to hold on or let go? I think um, life is nothing but a bunch of choices, and the best way to make a choice is by measuring the pros and cons. That's it. Like that's how I see it. So if you are confused between hold on and let go, measure the pros and cons. Measure the fact that
are you hurting someone in the way you're making a decision? So try to hurt at least number of people. Don't मतलब I feel like हम बहुत बार ऐसे करते हैं ना कि हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं, बट उसके अंदर बहुत लोगों को चोट पहुंच जाती है, राइट? So always also keep that in mind. So be kind to people and at the same time try to measure the pros and cons of things. Are you doing a tour again? Yes, I genuinely want to do it. I'm just deciding on the dates and which month. और भाई ये टूर बहुत अलग होने वाला है, बहुत लाइक दिस हैज बीन गोना वेरी इज गोना बी अ वेरी डिफरेंट टूर. कैसे आया भैया? अच्छा हाँ, ये तो हो गया. मैंने किसी का तो एक क्वेश्चन देखा था जो मैंने कहा था कि आई विल डेफिनेटली कम बैक टू दैट. मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा. आई एम श्योर आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट यार. झूम बराबर झूम का अगर किसी ने गाने सुने ना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स, लाइक इट्स गॉट वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स. हाँ, सो हमने पूछा था ये, हाउ डू यू कंसिस्टेंटली मेंटेन अ क्लियर हेड स्पेस एज एन आर्टिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस? I mean, I will be honest. I am actually in a space where I feel very dejected यार. मतलब सच बताओ तो मैं उस स्पेस में हूँ जहाँ पर है ना, वो ऐसा बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हम एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. वेयर इज इट गोइंग? हाउ इज इट? Why is it not showing up the way you want, and why the results not coming out? And it's a very normal thing to happen, right? People run out of patience. The most patient person can run out of patience of all the waiting that goes into creating something, right? और मुझे ऐसा लगता है कि that is a similar space for me. um, but I keep reminding myself of the fact कि मतलब if not this, what else? And that just keeps me tracked back on it, to just be determined to get that work across. Because मुझे पता है कि अगर ये नहीं तो मुझे नहीं पता मैं अपनी जिंदगी में क्या करूँगा. And it's just that constant thought that I just have to keep pushing the envelope for myself is, I think, what even on the worst days keeps me going. I won't lie, my worst days have been like I've had a gaming addiction thing. तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसा एज अ फेलियर फील करने लगता हूँ, आई जस्ट फॉल ऑन टू, लाइक आई जस्ट गिव इन टू माई फेलिंग addiction, gaming addiction, failing addiction, into my gaming addiction. And it's not the sweetest space because I have to recover from that and then get back to stuff. I really appreciate your words. Thank you. Yeah. Thank you so much, Kushi. Thank you so much. How would you know you're better off being friends with someone than dating them? I mean, Vidhi, again, जैसे मैंने कहा कि it's about what is the vibe between you, because हम बहुत बार क्या misunderstand कर लेते हैं, especially because of this one statement that your partner needs to be your best friend. Correct? तो that is the most confusing line for us, that मतलब दोस्त है, समझती है या समझता है मुझे एकदम सही से, तो cross the line and ask them that do you want to take this forward. I think what happens is you can care for people without thinking of a romantic relationship. हम हमेशा भूल जाते, because in this world like the amount of people who care for us is so less that हमें लगता है कि जो केयर कर रहा है हम उसकी तरफ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं और वो रिश्ते को बदलना चाहते हैं. The idea of a soulmate just doesn't exist for a partner, but it's also friends, right? um, like how would you how would you know you're better off being friends? I feel how I measure that is, uh, I measure it on a scale of how happy would I be if I had to spend like every day with this person, and how much would I grow with this person? Would I love to grow with this person? And when I say grow with this person, it's on a spiritual level, it's on a mental level, and it's also on a level of age. That would I love to spend my days with this person and grow old with this person? I think that's one space जहाँ पर I know that if I want to cross
the friendship line and go to the romance. But if I feel like I am just glad that this person exists in my life for me, I can call them at any point of time, I can chill with them, they understand me the best, they can complete my sentences, but I don't think I want to spend my entire life with them, then that, like, I genuinely think of it like, who do I want to grow old with? Ooh, trippy, काफी intense. Is it okay if I'm scared of love, but I do love the concept of being in love? It's completely fine, Khushi. It's completely fine. होता ही है कि you are scared of the concept of love because of your experiences, but you want love for the way it, for what it makes you as a person, how it makes you feel as a person. So yeah. झूठ नहीं बोल रहा भैया, मैं अपना गुस्सा बहुत प्यार से चैनलाइज कर लेता. थैंक्स श्रेया फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेडिटेशन एंड सॉरी योगा टीचर हु ट्राइड दिस योर्स. बट आई एम ग्लैड जैनिल, अगर ऐसा है तो वेरी नाइस. Normalize having no best friends. Alright then. रिकमेंडेशन में शूटिंग स्टार नजर आई, उसके बाद 5-6 वीडियोस दोबारा देख ली, सब मिस कर दिया. Nitin, so see, the best part about a live stream is that you can go up, you see this red cursor, उसे पकड़ो और पीछे ले जाओ मस्त, और फिर सुनते जाओ. या फिर आफ्टर द स्ट्रीम इज ओवर, ए आराम से जो पार्ट मिस किया वहां देख लेना. बट आई एम ग्लैड you skipped my stream to see my work. It's just, it's a beautiful feeling. How do you differentiate if it is attraction or love? Is it just I need attraction or seriously I need love? भाई यार ये इसके ऊपर बाद में आराम से आएंगे. भाई थोड़ा सा प्यार के अलावा भी थोड़ा कुछ पूछ लो यार. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे रेडियो पे बैठा हूँ लव गुरु की तरह. I am having a Shah Rukh Khan moment from आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं. I know I shouldn't sing. I will stop. I'm sorry. I just felt like you. You can't just read it. You have to sing it, dude. What are the odds of meeting you? Hope is all. Where do you come? Where did you complete your education from? I did my education bachelor's of mass media from नेशनल कॉलेज, पर उसके अलावा टिल डेट मैं बस सीखे जा रहा हूँ, जस्ट नॉट फॉर अ डिग्री. टॉपिक, हाउ डू यू फाइंड व्हाट यू लव डूइंग लाइक एट दिस एज? एवरीथिंग आई डू एक्साइट्स मी एंड गेट्स मी इंटरेस्टेड, but I lose interest as soon as I find something new. Send help. Great question, Jen. So how I tackle this, it's a very beautiful way. So it's called like it's the concept of rejection नहीं बोलना. So basically when you try out things and you enjoy them for a while, but then suddenly lose interest, so you know this is not your main goal, right? So to find what you love, you go through with the fact that what all things you don't want. So that's the segregation file कि मतलब photography try की पसंद आई फिर हटा दिया, फैशन डिजाइनिंग पसंद आई बहुत लंबे टाइम तक किया फिर हटा दिया. तो ऐसे बहुत सारी चीजें की और फिर like you come to like 3-4 points where you're like, oh ये बहुत बढ़िया चीज है. So yeah, you sing really well. अनुष्का झूठ नहीं कहते, देखो फिर मैं मान जाऊंगा और तकलीफ हो जाएगी. सुनो मेरे दिमाग में एक ही गाना है, एक वीक से चल रहा है, हवा हवा, कोक स्टूडियो वाला, हसन जहांगीर वाला. क्या ही गाना है, हवा हवा. ओ नहीं, एक्चुअली मैं नहीं सुना, सॉरी. मैं आज सुनूंगा पक्का. लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? ठीक है. देखो, एग्जाम्पल समझना, लैंग्वेज पे मत जाना. मुझे एक फेलो राइटर ने इसके बारे में बताया था एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, ही सेड हगने के लिए खाना कितना जरूरी है. आई नो, डोंट गो द एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल.
What it means is that you have to constantly consume so that something is going out of your system, right? That you can put out of your system, and also your system keeps running with energy. So it's very important to keep consuming. What happens with and consume different palettes of food, right? Don't just stick to Mughlai, go Italian, go stuff. अगर इंडिया की बात करो तो गो रीजनल. जैसे मैं तमिल तेलुगु फिल्म्स देखूंगा, मलयालम फिल्म्स देखूंगा, and I'll watch them in their language but with subtitles so that I understand what the film is. What you get out of this is you understand the language a bit. You get the essence of pronunciation, you get the essence of emotions with words, while understanding stories. I think साउथ में ब्यूटिफुल फिल्म्स आर बीइंग मेड, एंड आई फील लाइक वहां से मैं लिटरली कहानियां सीख रहा हूँ कैसे बनाई जाती है. So be open to experimenting and seeing more. Where did you get the eye glasses from? भाई ये मतलब this literally ऐसे नाके पे एक दुकान थी, मैं उससे बना कर आया हूँ. ऐसे मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं लेंस कार्ड बोल दूं, मैं लिटरली नाके पे जाके बना कर लाया हूँ. There is no time to try because everyone hates late success. No, that's the problem. Everyone doesn't hate late success. You guys just are in a rush to succeed. There's a difference. Um, this generation has the problem that everyone wants to succeed quicker because your counterparts have started, right? People of your age are trending on Instagram, making reels, and they've become content creators and influencers, and you feel like, "Arey, to main kyun nahi?" The point is, the idea is not to be one of the people who's viral and who's creating trend and earning money. The point is, what is your unique voice? What are you bringing on the table? How do I identify that Kavya is different from Shashank? What your voices have to be different, right? Aj मैं और अमन, हमारी the things that we talk about and the way we are as personalities are so different. We have unique voices, which even if you're talking about the same topic will feel different. एक honesty है उस expression में, and we do, and that only comes with the fact that we want to express rather than just keep getting viral and blowing up in that space. I am determined that nothing but the deepest love will induce me into matrimony. Boy. Yeah, be honest. किसी पे crush है whom you want to propose? भाई crushes बहुत है, but I don't want to propose as of now. I'm pretty much happy in the space that I am. मतलब अभी propose नहीं करना. सर मैंने मेरी फ्रेंड को दिखाया ये क्लिप, मेरा सुपर चैट उसके लेटर का पागल हो गई है. मेरा सुपर चैट उसके लेटर का पागल हो गई है. मे बी शी इज वॉचिंग. हर पेन टॉक्स इंस्टा आईडी, प्लीज डू सी. रुको, अभी हम टाइप करके सर्च बार में छोड़ देंगे ताकि आफ्टर द स्ट्रीम वी आर एबल टू check. Her pen talks found. All right, done. I found the account, and I will definitely check that out. I'll see where the post is. I'm sure messages अगर मैं check करूंगा तो मिल जाएगा. क्या आप कुछ सुनाएंगे? PS my favorite line. उसकी आंखों में मैंने वक्त के कांटों को थमता हुआ देखा है. This is from 120 seconds. मैं देखो अंत की तरफ वापस अगर कुछ हुआ तो I will recite. As someone who has done engineering, I would say it's better to complete your degree. I get your point, but then again, manifestation takes time, so better. अच्छा तू प्रीति से बात कर रहा है. Okay, you're talking to Preeti. I love how there are conversations happening internally only. Is oversensitivity a sin? No, oversensitivity is not a sin, but to think that everyone should be oversensitive is wrong. You can be on the levels of sensitivity, you can be anywhere on the scale, right? But to expect everyone to be as sensitive as you is wrong.
You must have people around you who accept you for what you bring on the table, right? For your personality. Like even if you're a very sensitive person, they should accept you for that, never tell you otherwise. Correct. But you should also not tell them that you guys need to be more sensitive in life, right? I think everyone learns where they fall on the scale with their experiences. Of course, with time, people do become more sensitive or they understand topics better, but we shouldn't dictate that. So, yeah. Did you ever find someone in your audience cute? Yes. Yes, most people know this story. The crush I had on this one person I found in my show during the tour in Bangalore. What's your day routine nowadays? My day routine nowadays is I'm trying to get out of my gaming addiction. And I know it doesn't sound like it's an intense thing. It is though. हम गेमिंग एडिक्शन को उतना ही क्या कहते हैं, लाइक वी थिंक ऑफ इट एज छोड़ो. But I'm trying to get out of my gaming addiction. I am watching one film every day. Like I've started falling back on my plan of watching one film every day, and I'm trying to read one like 50 pages of one novel every day. So yeah. Do you find writing easy? No, but I find expressing easy sometimes through writing. And because your happiness is more expensive than a planet tour, if I was Nadir Shah, I'd steal you instead of Kohinoor. How do you come out of comfort zone when you're stuck there? Um, the problem with comfort is that it blind like the idea of comfort makes you feel like now अभी struggle क्यों करना है ना. जैसे आप कुछ अचीव कर लेते हो, तारीफें हो रही है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अब हो गया ना, जितना करना था कर लिया. आई फील लाइक फॉर मी every time you succeed and complete one goal, another goal should be waiting for you. So this essentially doesn't make your life a race, but you always have something to look forward to. People basically judge and call sentimental. I mean, Anshika, not everyone's going to understand. It takes time. And I genuinely feel for that oversensitive person because, you know, बहुत बार ऐसा लगता है अरे तू जोक नहीं ले सकती, तू ये नहीं कर सकती. I feel like with time, people will program and learn that self. Like they'll program themselves in a way. कुछ novel suggest करना चाहोगे? So Frederick Backman करके Backman ही ना? हाँ, फ्रेडरिक बैकमैन करके एक बहुत ही बढ़िया राइटर है. उनकी आप किताबें देख सकते हैं. अ मैन नेम्ड ओव, उसके बाद एंशियस पीपल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नॉवेल्स. टुडे आई जस्ट केम अक्रॉस दिस बुक फ़ारेनहाइट वन फ़ारेनहाइट क्या था, फ़ारेनहाइट 141. वेट, लेट मी जस्ट चेक द बुक अगेन. आई एम like I'm in love with that concept of the book. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. It's a novel by Ray Bradbury. Beautiful, beautiful novel. I am going to start it from tomorrow. So yeah. उसके अलावा मानव कौल की कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, but I just had to. You know I write stories, long ones that too, but I find it easier to express when I put imagery, build the world. But listener often loses attention. How to get past it? I mean, it's very important what the imagery is. Is the imagery something that the listener can understand and relate to? Because बहुत बार क्या होता है कि हम हमारा एक्सपीरियंस लिखने के अंदर इतने ये हो जाते हैं ना, लाइक वी वांट टू मेक इट सो मी that we forget that people may not have experienced that too, right? तो जैसे अभी तुम देखो कि नोलन जब इंटरस्टेलर बनाते हैं, it is a world that we cannot imagine of. Inception, a world we cannot imagine of. But what he does is he makes these characters, he gives them emotions, he gives them goals that in a way make that character relatable to you. So when the character is exploring this world, it becomes easier for us to understand that world. इसलिए लोग इंसेप्शन 3-3 बार जाके देख रहे थे. आज भी सवाल उठाते कि भाई
मतलब was he like end scene में, was it a dream, was it the real world? Why are these theories happening? Because everyone got so connected to the character. So maybe in the story, make your imageries in a way where people feel like, you know, this imagery is something that they've seen, but at the same time, you what you could also do is कि तुम अपने आप को ऐसा किरदार ऐसा बनाओ कि लोग इस बात में रुचि रखे कि तुम जो जर्नी पे जा रहे हो तुम क्या पाने वाले हो. So yeah. Hmm. My graduation is about to complete and I'm happy about it. But again, I need to choose between my masters and writing. I mean, देखो यार मास्टर्स कर रहे हो तो तुम साथ ही साथ राइटिंग देख सकते हो. बट हाँ. Guys, would you like if I bring more people on the stream? Like, suppose जैसे पहले क्या हो रहा था कि सुहानी आ जाती थी या कोई आ जाता था. So like, would you love to know your favorite creators a little better on stream? Like, of course, हम जैसे chat से questions लेता हूँ मैं, topics लेता हूँ, we'll do that. But at the same time, just having an unfiltered conversation with your favorite creators. Would you like something like that? Just tell me in the chat. And also, Tamanna Bhatt ने लिखा, your new year resolution, nothing at all. As you grow older, you realize कि भाई ये फसाड है ब्रो, ये ऐसी चीजें नहीं होती है. छोड़ो ये सब. Ashish is like, no, oh my god, okay, okay, Ashish. You, yes, get more people, we would love it. Awesome. Dipesh Bansal, yes. Priti Chauhan, no. Oh, how come few people can achieve what they desire so easily when while others have to suffer, fail at all? क्या हो रहा है मेरी जबान को भैया? How to convert a diary entry into a poem? Manju, don't. Like, I feel like if it's in your diary, it's so personal. And if you want to convert into a poem, just be prepared that people are going to make comments over it. It's a very difficult thing to convert something from a diary into a poem. No, it's better with you only. All right, Kushi. Wow, we are really divided. No, no, no. There are a lot of more. Yes. Okay, okay, okay. We'll try it. मतलब एक आध दो बार ऐसे देख लेंगे. ट्राई करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ हाउ इट विल फील लाइक. देयर इज समवन नेम्ड थर्सडे. वाह, टेल अस अ मोमेंट ऑफ योर्स व्हेन यू फेल्ट ब्रोकन. Thursday, you've come on the wrong day to ask this. So lame. Yeah, so lame. Yeah. Sorry, I just couldn't help it. Definitely get more people. All right, we'll work on this. We'll see. Being alone or being your own company is better or not. I think it's important to strike a balance between them. You can't be a people's person completely. I've been a completely people's person for most of my life, and I'll tell you, lockdown mein the first thing that I realized is that I can be by myself. And so like वो जो period था कि जब I was alone, I did not dread being alone. I found happiness and calm in being alone, and I realized that I have to learn to balance the two. Do you think if you like somebody for more than 4 years, it is just a normal crush? भैया प्लीज जाके उसको बता दे यार. रोशन प्लीज जाके उसको बता दे यार. दादा, where do you live? I live in Mumbai, बाबा. I know, shivering at 11 degrees Celsius. तू पक्का ऐसे दिल्ली साइड रह रहा है भाई. What do you think if you have all the money you want? What would you think from this life? Shashank, I'll be honest, like, the concept of money with me is that I should just have enough money to build a house, and support my family. But I don't want, मतलब जो बड़ी luxuries है ना, those are not my dreams. My dream is to fulfill my work. I mean, it sounds very, I know, ऐसा लगता है कि अरे ये honest बात नहीं बोल रहा है कि पैसा किसको नहीं चाहिए. Of course मुझे पैसा चाहिए, पर पैसा मेरा प्रायोरिटी नहीं लाइफ में. मेरा प्रायोरिटी मेरा काम है, टू जस्ट गेट अक्रॉस माय वर्क, राइट. सो या. किसी ने कुछ तो सवाल पूछा था जो चला गया भाई, रुको. आई विल हैव टू फाइंड दिस. हाँ, हाउ कम फ्यू पीपल कैन अचीव व्हाट दे डिजायर सो इजीली व्हाइल अदर्स हैव टू सफर एंड फेल एट इट?
Dream Breaker Arts is asking this question. I'll be honest, this is one question that always troubles you, right? क्योंकि आप देखते हो कि हम सब रास्ते पे चल रहे थे, अब अचानक किसी को लिफ्ट मिल जाती है, वो आपके आगे निकल गया, आप गुस्सा हो जाते हो कि यार वो और मैं सेम चीजें कर रहे, राइट? इट्स the concept is that, right? You are doing the same things like them. You know you could do better, and you get angry about the fact that why them and not me? What was so special about them and not me? And the answer truly is that you are unique in your way, they are unique in their way, but the fact is that it takes time. And it, I know it's a miserable answer to give, but yeah, some people are just lucky enough to get the right opportunity at the right time, and some people just have to wait more. And I know it's not fair, I know it's freaking not fair, because you have the same talent or even better. I'm not even lying, there are so many poets out there who definitely are better than me, even at spoken word, right? But the point is, having the opportunity and making it count is what matters. The bigger thing is that being consistent in the fact that you maintain that bar and not get elated to the point ke, I'm your now, so I can be egoistic, or I can, like I made it. I think that is the killer. But yeah, I know it sucks, dude. I know it sucks. But yeah, I have this somewhat toxic obsession with earning money. I don't have any plans on how to use it, but I just want to earn. So is it healthy to have such a thing? Janil, तू खुद कह रहा है कि there is no purpose to why you want it. You just want it because हम एक तरीके से ऐसे सोसाइटी में भी बड़े हो रहे हैं, या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है यार। जैसे अगर कोई बच्चा जब बड़ा हो रहा हो, जैसे अगर कोई अमीर घराने में बड़ा होता है, तो उसको लगता है पैसे क्या चीज है ब्रो, आर्ट, फॉलो योर हार्ट। उसके लिए बोलना बहुत जरूरी, आसान है ब्रो, बहुत आसान है उसके लिए कहना कि अरे दिल की सुनो, क्योंकि पैसे है उसके पास। पर कुछ लोग जो जैसे मिडिल क्लास है या फिर लो मिडिल क्लास है, who've not had the comfort of luxuries that you can buy with money, they will think that money is a priority because they did not have it. सुबह के 4 बजे अगर लाइक हम, जब मैं अपने पुराने घर में रहता था, बहुत लाइक ये बचपन की बात है कि सुबह के 5 बजे पानी की टांकी ऑन करने के लिए उठते थे, तो आप सोचोगे ना कि अगर एक मोटर होती अपने पास, नहीं उठना पड़ता मेरे को, है ना? You want those comforts, you want those luxuries, and what makes you angry is that someone else has those luxuries and is preaching the fact that follow your dreams. The point is, what someone has in abundance, they will always think of it as they'll always take it as granted and always tell you to think of something else as a priority. It's very normal for that to happen. The point is, whatever your need, where does it arise from? What is the purpose of it? And will just having money satisfy your life? ब्रो खाना हो गया, मेरा बाकी है, मैं भी जाऊंगा। When is your next work with beautiful words coming on YouTube? Ah, cute. Soon. Genuinely soon. Kavya Singh is saying this is true as, oh, I don't want to say, but cool. I'm glad it is. I mean, unfiltered conversation है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। When life gives you lemons, ask for free honey. I have to act to make good friends. Then you're not making good friends. I don't know if it's me or many. I find difficult to go and talk to old classmates when we meet accidentally. It happens a lot of time क्योंकि अब बहुत साल हो गए, बहुत वक्त हो गया, क्या बात करोगे, नहीं समझ आता, चलो इग्नोर करके निकल लेते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। भैया देखो 450 लाइक्स हो गए हैं, 500 लाइक्स तक पहुंचा दो प्लीज। ठीक है, प्लीज प्लीज मेक सम वीडियोस ब्रदर। यस स्वयं, आई विल वर्क ऑन दैट, डन। आप क्वेश्चंस मिस कर रहे हो खुशी, सॉरी यार, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, like I'm trying to answer as many as possible. If you have to choose one out of poetry and your past, whom will you choose?
I mean, the past has given birth to the poetry, right? Like, if I choose poetry and I erase my past, my poetry won't have strength. I'll just be someone who's trying to mimic the viral topics. I won't have an honest voice. So I can't choose either. भाई मुझे गाने का पता नहीं क्यों मन हो रहा है रैंडम. भाई अनऑफिशियल मोड इज स्टिल एक्टिव, बस ऑफिशियल होने की देरी है. ऑलराइट आयुष्मान. आज अंधेरी लूटेंगे आसमान. बट सर रिच पीपल आर मोर लोनली, दे गेट हेटेड इजीली. मोमी आई जेन्युइनली मतलब nepotism is something that I talk about as a fact because I feel like हम ऐसे कह देते ना, ये आर्टिस्ट देखो नेपोटिज्म की वजह से आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ये तो सिर्फ अपने पापा माँ का नाम लेकर आगे आ गए इंडस्ट्री के अंदर. नेपोटिज्म. एंड वी गिव देम सो मच हेट डूड. व्हाई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर जैसा आपके पापा की दुकान है, ठीक है, अब पापा रिटायर होने वाले, ही मेड ओन बिजनेस, राइट, ही मेड हिज ओन बिजनेस. अब पापा रिटायर होने वाले, पापा किसको बिजनेस ऑफर करेंगे? समवन हु हैज बीन वर्किंग विद हिम फॉर 10 years और हिज चाइल्ड. मतलब if nepotism is bad, technically he should be giving the person who has been working with him for so many years and time period. But why does he choose their like his son or his daughter, or their son, their daughter, whatever? It's specifically because I made this and I would like that my child enjoy the comfort of this or enjoy the perks of something that I have started, right? um, what is important is the child always like the child should always remember that and should always make the business better. जैसे आप नेपोटिज्म की बात करते, रणबीर कपूर इज वन art like one actor who's in the industry because of nepotism, but he's a freaking genius, dude. He's giving such beautiful films. He gave you Ye Jawani Hai Diwani, he gave you Tamasha, he gave you Rockstar, he's given us Rocket Singh, Rajniti, brilliant films. So he is living like he got an opportunity and he's making the most out of it. So I feel like just we shouldn't be giving hate to people who've come with like nepotism. I feel the important part is like, are they making the most out of it? You ignored my request twice. Shiv Patel, I'm so sorry. Let me see Shiv Patel. I find no question from Shiv Patel. Oh, I found Shiv Patel. Bhai, I have written a poem 3 months ago and I'm finding a good voice artist for it. And I'm very bad at recording. So would you help me to recover it? It'll be great for me if you would help recover. Huh? Okay. I'm finding a good voice artist for it and I'm very bad at recording. So would you help me to cover it? How? How, Shiv Patel? How? Shiv Patel, message me on Instagram. Let me understand this better. I just watched Nolan's Memento today. It just blew my mind. You should watch it. Ah, bro, it's one of the brilliant films by Nolan. Nolan के शुरुआती टाइम पीरियड ऑफ हिज करियर ही मेड दिस फिल्म कॉल्ड मेमेंटो, जिसमें से गजनी पिक्चर उठाई गई है, मतलब एक तरीके से बनाई गई है. द आइडिया केम फ्रॉम देयर. सो या, to tackle nepotism, why can't we have inheritance tax like it is in USA? I mean, dude, like we could create these ideas. The point is not about having like a constitutional law डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो मतलब काफी चीजों के बारे में, बट द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. द पॉइंट इज एज ह्यूमंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन एग्जिस्टिंग is doing good work and we have to respect them for that, not from where they come and पापा की गोल्डन स्पून मिल गई है इसको तो ये छा रहा है. What if he's doing a great job? My point is us being more empathetic towards them, or towards these people, right? Not even them, they are us only, they are us only. जहां तक इनहेरिटेंस टैक्स और ये सब है, yeah, that could add like that could be a good deal that we put out. Record not recover. Stop. Sorry, typing mistake. If I could help you record that, how do I help? ठीक है, Shiv, just come on Instagram or
You could also join on Discord and मेरी टीम से अगर तुम बात करोगे तो then we'll connect on Discord. That will also be much more easier. Is it correct being with someone if you're not able to give them the same amount of love they give us? Dude, ये तो कभी possible ही नहीं होगा कि you can give someone the same amount of love. क्योंकि क्या है ना relationship में, और कोई भी relation आप उठा लो, the dynamics will always be that one person is more giving and the other person is more receiving. That shouldn't make the receiving end guilty, but it should, like, I feel like an important part of a relationship is to maintain the loyalty, the understanding, and the communication. Like there should be respect that one person is the more giving end and you're on the receiving end of something. But you, अब क्योंकि अलग अलग dynamics again, ठीक है, so one person can be more giving of gifts and the other person doesn't know how to gift. Like this is a genuine thing. When I was dating in my past relationship, I don't know how to gift, but my partner was amazing at it, right? So that dynamic, she was more giving, I was on the receiving side. But with other matters, suppose I was on a giving end and she was on a receiving end. So what it helps is that if you break down your relationship in dynamics, you will realize that आप कहीं ना कहीं ज्यादा गिविंग हो और कहीं ना कहीं आप एक स्पेस को लेके ज्यादा रिसीविंग हो. So you will find balance that way. But हाँ, bro, do your family members watch your videos? हाँ, कभी कभार. I mean, mom loves coming for my shows. She genuinely enjoys coming on my shows. भाई रिलेशनशिप भी नहीं हो रहा और ना ही पढ़ाई हो रही है. गुज्जर में इसमें क्या बोलो भाई. हैव यू वॉच ट्रांस? इट्स अ मलयालम मूवी. नहीं यार, मैं नहीं देखी. आई विल ट्राई. खुशी, आप मेरे से बात तो कर रहे हो आप? करण जौहर को प्यार करते हो क्या? नहीं रजत. अभी ये देखो, अभी मैंने नेपोटिज्म के अगेंस्ट नहीं बोला तो आपको लग रहा है अरे जो करण जौहर का ये, करण जौहर का वो. कैसी बात है यार. आप पॉइंट समझो ना. आप पॉइंट समझो. आप आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ भी क्यों बोलते हो? हाउ टू स्टॉप स्ट्रेसिंग आउट? If I had an answer for it, life would have been so much easier. I mean, आयुष्मान, मुझे लगा था हम भी फैमिली. वेल वेल प्लेड आयुष्मान, ब्यूटिफुल. इट यू टर्न द टेबल्स ऑन मी, अमेजिंग. बट आप एक्सटेंडेड फैमिली हो डूड. मतलब मैं, you people give me a lot of motivation and hope. There is no say to that, and I am genuinely grateful for it. But the moment I say you, everyone is family, everyone who loves me is family, that just means I am responsible for your happiness also, right? It just puts me in that space. क्योंकि when I, जब मैं किसी को परिवार कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मतलब अगर वो तकलीफ में है तो आई हैव टू बी देयर. अगर वो खुशी से कुछ बांटना चाहते हैं तो मैं वहां पर होना चाहिए. सो लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज, सो विच इज आई डोंट डायरेक्टली से कि सब मेरे परिवार वाले या सब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली. लाइक नॉट एवरी वन इज फैमिली टू द पॉइंट वेयर आई वुड से दैट यू नो मैं सबके लिए पहुंच जाऊंगा. इसलिए मैं कहूंगा आप एक्सटेंडेड परिवार हो जो मुझे प्यार कर रहे हैं. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल. बट हाँ, 500 likes, very nice, very nice. Yes, I think guys, it's food time, dinner time. तो मतलब डिनर के लिए तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों. इट्स सच अ ग्रेट टाइमिंग. लाइक्स 500 पार हो गए और हमें डिनर के लिए जाना है. आज बोनी भी अच्छी हो गई. 450 रुपए भाई. पैसों में भी अगर 500 मार देते आज तो मजे आ जाते. मतलब ऐसे स्ट्रीम बंद करते करते से लगता वाह क्या कमाई किया जब हमने. फ्रॉम विच स्टेट आर यू? मुंबई. हेलो, हाउ यू डूइंग? जेनी इज सेइंग मैं बढ़िया, मैं बढ़िया. 1 मिनट दो, मैं बस मम्मी को बोल दूं कि थोड़ा वक्त. एक गाना हो जाए अब प्लीज.
Bro, I just realized if you share, you look like Shrija. Please, नहीं. My mind has broken, dude. क्या बोल दिया ये? I should thank you firstly because I used some of your lines to get someone special. Mumbai is a city and Mumbai is an emotion. अच्छा भाई, अगर मुंबई बोला तो स्टेट कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र. कैसी बात कर रहे हो यार? स्ट्रीम पर ही डिनर कर लो. नहीं भाई, नहीं. गलत चीज. भाई डिनर हैज टू बी एंजॉयड. डोंट मिक्स वर्क विथ मील्स. गलत. आई होप यू आर ऑलवेज लाइक ब्रदर टू मी. आपको देख के ही मैंने लिखना स्टार्ट किया. मुझे आपके लिए परफॉर्म करने का मौका भी मिला था. दैट वाज द बेस्ट डे. लव यू भाई. आयुष्मान यार, कैसी क्यूट बातें कर देता है ना तू. सी, यही प्यार है ना. मतलब मैं क्या बोलूं अभी इसके ऊपर यार. थैंक यू. आई एम ग्लैड. थैंक यू सो मच फॉर जस्ट गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट. हैव यू वॉच्ड 5 feet apart? यस आई हैव. चलो दोस्तों, आई विल हैव टू लीव नाउ. You are a very inspiring bhai. You are a very inspiring bhai. Thank you, Rishi. Thank you so much. Um, Let me just end the stream on a note that you guys will remember by singing a song. Why? Uh, मतलब जल्दी बताओ, कोई एक गाना बता दो जो ऐसे गा के मैं खत्म करके ऐसे बोल सकूं. डियर या योर एक्सटेंडेड फैमिली आर ऑन द रिसीविंग साइड, ऑलवेज रिसीविंग लव and beautiful bunch of words from you. Love your extended family. Deepa. Thank you. I swear. Thank you. Just love your voice. Thank you so much. Hawkeye देख ले? Yes, of course. मैंने डेयर डेविल भी देखा है दोस्तों, तीनों सीजन. मतलब मैं नेटफ्लिक्स का भी जो पूरा हमारा पार्ट है ऑफ मार्वल, वो भी सब देखा है. तो आई मीन आई एम वेरी अप टू डेट गाइस. थैंक यू. लर्निंग इटर्नल मेडिसिन मीन्स अ लॉट. मंजू कह रही है यू आर अमेजिंग. थैंक यू सो मच. Anyway, thank you so much, guys. This has been great. I will meet you soon. I'm trying to be more regular with the streams. तो जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह. And any Anu Singh Jain, okay. बारिशे बारिशे लिरिक्स जल्दी जल्दी करते हैं. त त त त त त त. भाई बंदे ने क्या लिखा है? तेरी ही बात हो गई. चलो ठीक है. Are you guys ready? इट वुड बी बेस्ट अगर तुम्हें ये नहीं सुनना तो तुम अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है. मार्वल क्विज करे सुन. डन. मून नाइट का ट्रेलर देखा? यस. यस आई हैव सीन. ठीक है, मैं बारिशे के थोड़े लाइंस गा रहा हूँ. प्लीज जज मत करना. प्लीज डोंट लीव मी आफ्टर दैट. ये मेरा चिल मूड है. कहाँ से गया? अब तू आती है, बुलाती है, बिस्तर से यू. वापस करते हैं, वापस करेंगे. ठीक है. अब तू आती है, बुलाती है, बिस्तर से यूं गिराती है कि सो मैं बाहों में बस तेरी. हाँ. जब बारिशें बरसती है, पागल जैसे थिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो. अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निंदिया की रातें हैं. तो और तू ही मेरे दिल की रजा है, तेरे बिना दिल भी खफा है. तो तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूं. हाँ. हाय रब्बा. पाप चढ़ गए, पाप चढ़ गए, पाप चढ़ गए. आई होप बस अनूप ये ना देख ले. बहुत बहुत ऐसा बुरा लग जाएगा भाई. अरिजीत को रिटायरमेंट दे दो. भाई इतना नहीं चढ़ाता आदमी को, इतना नहीं चढ़ाते कभी किसी आदमी को.
ठीक है, ट्राई करते रहो, मजा आया वैसे। थैंक यू सो मच। एंड ही हेजिटेटेड टू सिंग, सर योर वॉइस इज परफेक्ट। भाई कुछ भी, झूठ नहीं कहना, झूठ नहीं कहना। ठीक है, एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच, दिस हैज बीन अ ब्रिलियंट स्ट्रीम। आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर, आप भी रेगुलरली आते रहिए। हम ये कारवा बढ़ाते रहेंगे, मजा आता रहेगा। एंड या अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये साल हम मचाएंगे इंशाल्लाह, टचवुड। चलो, बाय, सी या, टेक केयर गाइस, टेक केयर एवरीबॉडी, लव यू।